हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दर्शन-D। आज मैं इंटरव्यू की सीरीज में एक दूसरी कंपनी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आया हूँ और ये 25 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कंपनी में पूछे जाते हैं। और ये सिर्फ क्वेश्चंस हैं, इसके सॉल्यूशंस अभी नहीं है। सॉल्यूशंस डालता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। So I'll be focusing only on the question side, but if you need answer of these questions, please do let me know in the comment section so that I can help you out with the answer as well. So let's start with the company. आज की जो इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला वो कंपनी है कैपजेमिनी। यहाँ पे मैंने दो बार इस कंपनी का ऑफर लिया। दो बार काफ़ी अच्छे पैकेजेस पे इनसे ऑफर नेगोशिएट किया था। So without any further delay, let's get start. So मैं इस कंपनी के रिगार्ड्स में डिस्कस करूँगा लाइक हाउ द प्रोसेस स्टार्ट, हाउ इंटरव्यू हैपेंड, फीडबैक्स। ऑफ कोर्स जब आप टेक्निकल क्लियर कर जाते हो, एचआर क्लियर कर जाते हो, तो आपके पास एचआर नेगोशिएशन होता है, सैलरी नेगोशिएशन होता है, एंड देन यू गेट ऑफर। आफ्टर ऑफर आपको एक ज्वाइनिंग डेट दिया जाएगा। ऑन द डे ऑफ ज्वाइनिंग you'll visit office or you'll join your company. Of course Capgemini is a very good company. It's a बहुत बड़ी MNC है और ये जो मैंने इंटरव्यू दिया था ये बैंगलोर लोकेशन के लिए था। तो या लेट्स स्टार्ट विद दैट प्रोसेस फर्स्ट। सो प्रोसेस एज यूजुअल, आपको कॉल्स आते हैं एचआर्स रिक्रूटर का कॉल आता है and they'll take your information details like your educational qualifications, experience, technology stack, all these things. They'll take it out and then they'll process your profile for their openings. uh, After your profile gets shortlisted, आपको आपसे वो आपका इंटरव्यू के लिए शेड्यूल टाइम एंड समय जो भी होगा कन्वीनियंस आपके हिसाब से वो पूछेंगे and the day interview comes. Now generally interview basically इनके होते हैं 3 rounds of interview. फर्स्ट प्योरली टेक्निकल, जहाँ पे सारे आपके टेक्निकल एस्पेक्ट्स चेक किए जाएंगे, जहाँ पे आपने जो आपका एक्सपर्टीज होगा, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होगा, उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड देन द नेक्स्ट इट डिपेंड्स एक्चुअली, sometime it become managerial, technical managerial, or sometime become again purely technical also. That it's totally depend on the interview, I would say. Now the HR discussions start. So in interview questions I'll be discussing about these things like core Java, Spring Boot, Spring JPA, microservices, and SQL side. So since I'm a Java backend developer, so these are the area from where they were expecting some questions. You can also expect some questions. Now let me start with the interview questions which they have been asked actually. Okay, so I have listed out top most 25 questions for this Capgemini interview. So let's start with that. So definitely the interview start with your basic basic information about yourself, like tell me, the first question would be like tell me about yourself. So ये ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी वेग हो सकता है, आप कैसे उसको डिस्क्राइब करते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. Prepare well for that. Now it start with basically everywhere. If you go for any service based company, they start with the core Java. The core Java should be very good actually, I would say. So the first questions you can expect mostly the polymorphism is the where वो आपको काफ़ी फंसाने की कोशिश करते हैं polymorphism पे. So they can ask you like what is static and dynamic polymorphism. Okay, so that the totally, I mean, similarly like how we can say that runtime and compile time polymorphism. So it's similar to that actually. So
just prepared accordingly. And the next questions, it was related to that string. String is something, it's very useful in Java actually, I would say. तो string एक काफ़ी broader concept है in Java. So वहाँ से क्वेश्चंस बहुत लेंदी क्वेश्चंस बनते हैं. फॉर एग्जांपल्स लाइक व्हाट इज स्ट्रिंग लेटरल्स एंड how it gets memory actually, where it get memory, like we know that string pool and all those things, right? तो कैसे उसमें create होते हैं, क्या क्या thing, कैसे how many ways we can create the string, these are the things actually. um, like what is string pool, uh, why string is immutable, you know uh, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं. जैसे now, since you know that if you are able to give the questions answer of this questions like how string is immutable, the next questions probably they can ask you about that. Then how you'll make your classes immutable, right? So how you'll make your classes immutable now. Now once you will make your classes immutable, then they ask about this how singleton works actually. How is the singleton design pattern works? What is the difference between singleton and immutable if you are making those things around? So what is the difference between these two? You know, so these are the major questions I would say from the core Java. Apart from that, definitely in exceptions they can ask you something about that. What is the parent class of exception? How try catch works, how try catch finally works, how try catch and finally works. You know, so these things actually they can ask you. Coming towards collections in Java. So the major questions, once you say that I'm okay with the collections and all, the very first questions they'll come from linked list and array list. The major difference they'll ask, what is the difference between these two? कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, कहाँ पे लिंक लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे एरे लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं. तो इसके रिगार्डिंग में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए. नेक्स्ट आई वुड से द वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आई वुड से जहाँ पे इंटरव्यू काफ़ी लंबा जा सकता है, वो है हैश टेबल एंड हैश मैप. हैश टेबल एंड हैश मैप यहाँ पे एक सिंक्रोनस एक असिंक्रोनस होता है. तो कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि हाउ हैश मैप वर्क्स, हाउ हैश टेबल वर्क्स, these things actually. Then next questions you can expect like what is concurrent hash map, how concurrent hash map works. What is the difference between concurrent hash map and normal hash map, ये सारी चीजें. Now these are some major questions I would say from the collections. Now coming towards SQL side. SQL में आपसे क्वेरी लिखने को ज़्यादा बोला जाएगा कि जस्ट राइट डाउन योर क्वेरी फॉर दिस पर्टिकुलर table, that how to fetch the data, but it depends on actually that क्या क्राइटेरिया मिल रहा है आपको क्वेरी राइट करने के लिए. फॉर एग्जांपल आपको जॉइंट लिखना आना चाहिए, that how you can joint one table to another table. For example, there are multiple ways to joint, like inner joint, outer joint, left outer joint, right outer joint, right inner joint. These are the joints we have. Cross joint, but how you can write it down joints. For that आपको SQL की query आनी चाहिए. The next question is आपको basic functions आपको पता होना चाहिए SQL में, like sum, average, these kinds of functions, how you can use it actually. Like आपको sum of all the employees की salary निकालना हो तो कैसे निकालोगे, right? How many entries in database you have, for that आपको पता होना चाहिए count method कैसे use करना है. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको SQL में पता होना चाहिए. Now coming towards Spring Boot, Spring framework. Nowadays people are preferring more Spring Boot over Spring because it's very lightweight and easy to start with Spring Boot. So I'll be focusing on these things. The very first question is that why you're using Spring Boot over Spring. That is very crucial actually, I would say, when we start interview on those things.
बिकॉज आपने पहले ऑलरेडी स्प्रिंग यूज कर रहे थे, देन व्हाई यू आर यूजिंग स्प्रिंग बूट नाउ. So आपने अगर यूज किया हुआ स्प्रिंग बूट, then I'll be able to, I mean, you'll be able to give the answer of these questions. So now coming towards the questions, like first questions I would say from spring boot is कि आपको you expect कर सकते हो कि spring boot में what is parent in spring boot. If you'll see that pom.xml, हम वहाँ पे parent define करते हैं. Why we use this parent first of all. You should आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, like what is actuator, what is dev tools, you know, these things should be अगर आपको पता है then it's well and good. Try to find out that how actuator works and dev tools and all. So it's better, I would say, that create one small project and try to implement this actuator, these things, so that आपको वो जो इनका जो basic features मिलता है, right, like how to get this information about your applications, how the health of the application and all, so that we have a particular API created for that, how to use that, those things आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए. Now the I would say, in when it comes to the REST side, तो सबसे बड़ा questions बनता है, जैसे they can ask you like difference between REST and REST controller, and these are the annotations which we use to create our endpoint, right, uh, REST endpoint. तो ये differences now अभी क्या हो गया है कि अब सब कोई REST controller यूज कर रहे हैं over the controller. So then why we are using it actually, so difference आपको पता होना चाहिए. Then how you can change the server port, how you can change the server port and application actually, next questions I would say. And I mean, like they'll ask you that which database you have used it. आपको पता होना चाहिए that कौन सा database आपने यूज किया है. Then अगर आपने यूज किया है तो आपको पता होगा कि how you'll make the connection with your database through your applications, right. तो आपको how you make the connections, उसके लिए आपने क्या क्या डिपेंडेंसी ऐड करी है वो आपको पता होना चाहिए, right. And another question is like what is the difference between monolith and microservices. When it comes to the microservices side, you can expect like why we are using microservices and why not monolithic. अगर monolithic already काम कर ही रहा था, then why we are moving towards microservices now. So it's a very vague, I would say, very complicated things. It's not a complicated, but it's a very vague, broader field, I mean, say that, जहाँ पे आप इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं अगर आपने दोनों पे काम किया हुआ है तो. नहीं तो आप इन सब चीज़ों को तैयारी कर लें, और ये आपको वेरी हेल्पफुल होंगे इन इंटरव्यू. Like what all the design patterns we have, right, in microservices, right. Like we have so many design pattern, like domain driven architectures we follow, right. uh, like Saga, like for the transaction related things, and also we have used so many design patterns we have. तो आपको कोई एक डिजाइन पैटर्न आपको पता होना चाहिए जिस पे आपने काम करा है. अदरवाइज रिसर्च ऑन इट, फाइंड आउट, और जो आपको सूटेबल लग रहा है ग्रैब ऑन इट. तो ये चीज़ें हो गई. नाउ कमिंग टुवर्ड्स दैट माइक्रोसर्विसेज दैट साइड इज कि वो आपने कम्युनिकेशन कैसे करा है on microservices to another microservices. There are multiple ways to make a connections, right. We have like point to point synchronous, basically we call it as a synchronous and asynchronous calls, right. That how you can make it synchronous call, and as we know that REST template is a synchronous call, how you can make it asynchronous call. Those things actually you have to prepare for that. Now actually I missed it in REST side, the questions. One is related to that, what is the difference between beans and auto-wires, how it works internally, and the major annotation in Spring Boot is like @Spring Boot applications. So these are the questions I found it very important for the interview process. अगर आपने इन सब की तैयारी कर ली तो मैं समझता हूँ कि 70-20% ऑफ क्वेश्चंस आपको इसी से आने वाले हैं, ठीक है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फीडबैक. फर्स्ट टेक्निकल राउंड कंप्लीटेड. आपने दूसरे राउंड में जाने के लिए आपको इसका फीडबैक पॉजिटिव होना चाहिए, ऑफ कोर्स, देन ओनली यू विल बी गोइंग इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू. एंड नेक्स्ट राउंड basically again it's depend on
द टेक्निकल मैनेजरियल, और इट्स मे बी क्या होता है कि कई बार प्योरली टेक्निकल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, बट यू जस्ट फोकस ऑन दिस क्वेश्चंस। इट माइट रिपीटेड, इट कैन बी रिपीटेड इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू एज वेल, बट आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया और दे कैन आस्क यू अबाउट दैट हाउ वी हैव डील विद द प्रेशर्स एंड हाउ वी हैव वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट। आपने क्या क्या चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है, हाउ वी हैव इम्प्लीमेंटेड इट, हाउ यू मेक द कॉल्स in a team, how you get help from the team. These things you can expect it in the second round of interviews. Then HR, एचआर बेसिकली जब आप 2 राउंड क्लियर कर लेते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आपको सैलरी नेगोशिएशन ही करना होता है, दैट्स इट। और एचआर इज दे आर लाइक वेरी गुड इन सैलरी नेगोशिएशन। आप कुछ नहीं कर पाते हो, जो करना होता है वही कर लेते हैं। एंड देन इन Capgemini it takes minimum 1 to 2 weeks of time to release the offer. Once you'll accept it, you will get one joining date, and then here is the day you are going to join that company. Yeah, that's all about my about this series. I mean this series. Thank you for watching. Keep watching. Thank you.